Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, myself Professor Uday Bukre. Now I am welcoming you on your own YouTube channel Ekeeda. If you are watching my video for first time, I request you to subscribe to our channel Ekeeda and also press bell icon for your latest notifications. Friends, today we are going to learn for CA Intercourse Accountancy subject single entry topic question number 3, which is now on your screen. Following information relates to the business of Mr. Shiv Kumar, who requests you to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2011 and balance sheet on that date. रिक्वायरमेंट क्या है उनका? दे वांट यू टू प्रिपेयर व्हाट? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, ये दो बातें उन्होंने पूछी है आपको. उसके लिए इंफॉर्मेशन दिया है ए बैलेंसेस ऑन 31st मार्च 2010. तो ये लास्ट ईयर का आपका क्लोजिंग बैलेंसेस है जो करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएगा. देन दे हैव गिवन यू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर. तो ये सभी अकाउंट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आपको दिए गए हैं. ठीक है, बिल्डिंग 320 का 360 हुआ है, फर्नीचर 60 का 68 हुआ है. दिस इज हाउ दे हैव गिवन यू द बैलेंसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट. स्टॉक ओपनिंग में आपको कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन क्लोजिंग में आपके पास स्टॉक है 40,000 का. बिल्स पेबल आपको दिया है, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है, डेटर दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है. Now what I will do with this? With the help of opening balances, I will prepare opening statement of affairs. And with the help of closing balance, I will prepare closing balance sheet. I will call it as a balance sheet because now I am converting it into double entry. ठीक है, cash transaction during the year included the following besides the certain other item. तो ये आपको क्या दिए हुए? cash transaction during the year beside other items in the year. Sale of the old papers and the miscellaneous income 20,000. Miscellaneous trade expenses including salaries etc. 80,000. Collection from debtors 2 lakhs. Cash purchases 48,000. Payment to creditors 184,000. Cash sales 80,000. ऐसा कोई scattered information आपको दिया है. We need to imagine double entry effect of these transactions. We have to actually imagine journal entries which could be recorded for these transactions. Other information: bills receivable drawn during the year amounted to ₹20,000 and bills payable accepted are ₹16,000. Some items of the old furniture whose written down value on 31st March 2010, that is at the beginning, was sold on 30th September 2010 for ₹8,000. Depreciation is to be provided on building and furniture at the rate of 10% per annum and on motor car at the rate of 20% per annum. Depreciation on sale of furniture is to be provided for 6 months. तो आपने जो फर्नीचर यहाँ पे बेचा है उसके ऊपर डिपेंड आपको कितने महीने का देने का स्टूडेंट? 6 मंथ्स का. एंड एडिशन टू द बिल्डिंग फॉर फुल ईयर और होल ईयर. तो आपका जो भी एडिशन टू द बिल्डिंग हुआ है उसके ऊपर फुल ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा. मतलब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ओपनिंग में बिल्डिंग कितने का था? 320. क्लोजिंग में कितना हुआ है? 360. तो गोज विदाउट सेइंग हम लोगों ने 40 का परचेज किया रहेगा, 40,000 का परचेज किया रहेगा, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि फुल ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा. दिस वी विल लर्न व्हेन वी सॉल्व द बिल्डिंग का एडजस्टमेंट. Of the debtor, a sum of ₹8,000 should be written off as a bad debts. तो डेटर्स में से आपको बैड डेट्स राइट ऑफ करने का है. एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 2%. शिव कुमार हैज बीन मेंटेनिंग स्टडी ग्रॉस प्रॉफिट रेट of 30% on the turnover. तो आपका जीपी रेशियो दिया है 30% on turnover. Outstanding salary on 31st March 2010 was 8,000 and on 31st March 2011 was ₹10,000 on 31st March 2010. ठीक है, तो आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी का इंफॉर्मेशन दिया है. आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31st March 2010 was 8,000 and on 31st March 2011 was ₹10,000. Then full stop. On 31st March 2010, PL account has a credit balance of ₹40,000. तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर आप समझ सकते हो एंड अकॉर्डिंगली ये आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ PL अकाउंट दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट 20% of the total sales and total purchases are to be treated as for cash. तो क्लियरली बोला है कि आपके जो भी टोटल सेल्स या परचेस है उसमें से 20% जो है वो कैश के लिए है. Addition to furniture account took place in the beginning of the year and there was no opening provision for doubtful debt.
तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको दी है और आपको उन्होंने पूछा है कि आपको बनाने का है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2011 विच इज क्लोजिंग डेट। ठीक है, आराम से मैं इसका प्रेजेंटेशन बना रहा हूं। तो स्टूडेंट, वी हैव टू बिगिन विद द ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस सबसे पहले आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे। तो पहला वर्किंग नोट आपका बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन दिस डेट 31 मार्च 2010, तो जिसके लिए मैं वर्किंग बना रहा हूं। फॉर द स्टॉक देयर इज अ डैश हियर, तो वी विल वेट फॉर द इंफॉर्मेशन। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस मिलता है क्या, और चेक करेंगे। क्वेश्चन ने क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पे नहीं रखा है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको नील मानूंगा या फिर मैं चेक करूंगा कि मेरे को कोई ओपनिंग स्टॉक डिराइव हो सकता है क्या। तो आई एम कीपिंग दिस लाइन ब्लैंक। I have collected information from point A regarding opening balances. This information we have posted. One more thing, I need to see whether there are some other opening balances which are given in the example. Point number 5 says that outstanding salary on 31st March 2010 was rupees 8,000. तो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग सैलरी था 8,000. P&L account had a credit balance of rupees 40,000. Importantly, P&L account will be added to the capital. तो जब भी कैपिटल मिलेगा तो that will be including P&L account that we will write down later on. This is how I have recorded opening balance. अभी सर ये opening balance का second effect कहाँ पे आएगा? तो let us go step by step. Here I suggest you one thing. आप अगर कोई specific amount उठाते हो तो उसके related सब adjustment complete करो. There is no other way to complete this. ठीक है, तो अगर मैं बिल्डिंग लेता हूँ यहाँ पे, तो बिल्डिंग के बारे में आगे कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है चेक करते हैं. They are saying some items of old furniture whose return on value on 31st March 2010 was rupees 20,000 was sold on 30th September 2010 for rupees 8,000. तो ये फर्नीचर का इंफॉर्मेशन इग्नोर इट. डिविडेंड टू बी प्रोवाइडेड ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% एंड ऑन मोटर कार एट द रेट ऑफ 20%. तो बिल्डिंग के लिए कितना डिप्रिसिएशन है स्टूडेंट, 10%. देन दे आर सेइंग एडिशन टू द बिल्डिंग. They are saying further depreciation on sale of furniture to be provided for 6 months and addition to the building for whole year. Sir, what is addition to the building? You can check it out. आपका बिल्डिंग जो है वो एंड में 3,60,000 बन गया है. मतलब मैंने 40,000 का बिल्डिंग खरीदा है, तो मेरे बैलेंस शीट में जो पुराना बिल्डिंग है उसके साथ 40,000 ऐड होगा एंड अकॉर्डिंगली मैं वर्कआउट करूंगा डिप्रिसिएशन. सो वी विल राइट हियर. इंपॉर्टेंटली ये जो नया लिया है उसके लिए आपको कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है, तो वी हैव टू कीप इन द माइंड. तो आपका टोटल बिल्डिंग कितना हो गया, 3,60,000. डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर फुल ईयर. तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दे गिव यू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर 10%. ठीक है, तो 10% वी आर माइनसिंग.
and finally outer column it will be 3,24,000. ठीक है, तो अभी ये बाकी के ट्रांजेक्शन के सेकंड इफेक्ट मुझे देने हैं। तो न्यू बिल्डिंग जो मैंने लाया वो कैश और बैंक अकाउंट में क्रिएट होगा, तो मेरा नया और एक अकाउंट बनेगा कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट, पहले हम लोग को इसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है। ओपनिंग बैलेंस इज 1,80,000, तो आई एम नोटिंग इट डाउन। अपने एग्जाम्पल में हम लोगों ने नया बिल्डिंग लाया था, उसका अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा कैश और बैंक अकाउंट में। Depreciation we will debit to profit and loss account. This is a depreciation we will debit to P&L account. स्टूडेंट, ये लाइन के ऊपर का मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये लाइन के नीचे मेरा P&L अकाउंट बनेगा, जो मैं नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। तो डेप्रीसिएशन में यहाँ पे डेबिट कर रहा हूँ। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 36,000। ठीक है, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड बिल्डिंग कंप्लीटली। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज अबाउट फर्नीचर 60,000। फर्नीचर के बारे में क्या दिया है? सम आइटम्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हुज रिटर्न डाउन वैल्यू वाज ऑन 31st March 2010 was rupees 20,000 was sold on 30th September 2010 for rupees 8,000. Depreciation is to be provided on the building and furniture added of 10% per annum। और नीचे कहीं पे इंफॉर्मेशन भी दिया था, जो depreciation on sale of furniture is to be provided only for 6 months। आराम से। तो भी अपने पास फर्नीचर का दो पार्ट हो जाएगा, एक तो जो टोटल फर्नीचर है उसमें से कुछ बिका है और कुछ नहीं बिका है, और नया भी फर्नीचर हम लोगों ने लाया है। तो इट इज बेटर कि वी विल प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस। लेट्स सी फर्नीचर अकाउंट नाउ। ओपनिंग में फर्नीचर आपका कितना था? इन द बिगिनिंग वी वेर हैविंग फर्नीचर ऑफ 60,000, तो आई एम नोटिंग इट डाउन। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि सम आइटम्स ऑफ द ओल्ड फर्नीचर हुज रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 31st March 2010 was rupees 20,000 was sold on 30th September 2010 for rupees 8,000। तो पहले 20,000 के बारे में स्पेसिफिकली बात हो रही है, जिसको हम लोगों ने बेच दिया है 30th सितंबर को। जब भी आप असेट बेचते हो तो याद रखना उस तारीख तक का डिप्रीसिएशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं डिप्रीसिएशन। It is on 20,000 at the rate of 10% for 6 months. It will come to 1,000। बराबर है। तो जिसका बुक वैल्यू 20,000 था उसके ऊपर आपने डिफरेंस दे दिया 1,000, मतलब अभी उसका रिड्यूस वैल्यू बन गया 19,000। इट वाज सोल्ड फॉर हाउ मच? इट वाज सोल्ड फॉर व्हाट? 8,000। तो आई कैन से बाय कैश और बैंक अकाउंट। तो कॉमन सेंस से मुझे लॉस कितना हुआ है 20,000 के फर्नीचर के ऊपर, वो कहाँ पे चला जाएगा? बाय P&L अकाउंट। सर ये लॉस मैं कैसे निकालूंगा? मेरा बुक वैल्यू कितना था स्टूडेंट? 20,000 बिगिनिंग में था। 1,000 का मैंने क्या प्रोवाइड किया था? डिप्रीसिएशन, और 8,000 मुझे मेरा सेल प्राइस मिला था। तो मुझे मेरा लॉस मिल गया, मेरा लॉस हो जाएगा 11,000 का। तो लॉस as well as depreciation will be debited to P&L account and 8,000 will be debited to cash और बैंक। उसके अलावा मेरे पास उन्होंने कहा है कि मेरा क्लोजिंग फर्नीचर जो है वो ओवरऑल कितने अमाउंट का है? इट इज ओवरऑल ऑफ 68,000। तो क्लोजिंग फर्नीचर आई एम नोटिंग इट डाउन हियर। After writing this closing furniture, I will be able to find out what is purchase of furniture during the period. This total is 88,000. तो स्टूडेंट मेरा ये जो डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा 28,000 का, it is a new furniture which we have purchased by paying cash. तो I can say to cash or bank account।
ठीक है, तो ये मेरा नया फर्नीचर है और ये फर्नीचर जो 68,000 है वो मेरे को क्वेश्चन में छाप के दिया था 68,000। ये मुझे टोटल डिप्रिसिएशन भी देना है और उसके बारे में क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि डिप्रिसिएशन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज प्रोवाइडेड फॉर 6 months एंड फॉर एडिशन टू द बिल्डिंग फॉर द होल ईयर। पॉइंट नंबर 7 में बोला है एडिशन टू फर्नीचर टुक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट मीन्स फॉर फुल amount of furniture we will provide a depreciation, there was no opening provision for doubtful debt। तो ये closing 68,000 यहाँ पे आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 68,000 जिसके ऊपर मुझे पूरा डिप्रिसिएशन देना है। ये मेरा टोटल फर्नीचर, इसके ऊपर फुल ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा। तो अगेन आई एम राइटिंग हियर बाय डिप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर एट द रेट ऑफ 10%। 68,000 का 10% बनता है 6,800। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ फर्नीचर आई विल राइट टू द बैलेंस शीट। तो ये तो हो गया सिर्फ फर्नीचर के बारे में। अभी इसको कैसे रिकॉर्ड करना है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर वी विल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टोटल डिप्रिसिएशन depreciation is 1,000 plus 6,800, these two 1,000 plus 6,800। नेक्स्ट ये जो फर्नीचर बेचा है इसका जो भी आपको कैश मिला है कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $11,000। This closing furniture has become here opening furniture. Then depreciation and closing furniture I will write in the balance sheet। It is 61,200। डेबिट साइड पे एक था कैश और बैंक, मतलब ये नया फर्नीचर आपने खरीदा था तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट इन कैश अकाउंट 28,000। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड फर्नीचर का एडजस्टमेंट। आराम से एक बार वापस चेक करो। ओपनिंग में आपको फर्नीचर दिया था 60,000, दे टोल्ड यू फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट वाज सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड फॉर 8,000। तो 20,000 के ऊपर 6 मंथ का डिप्रिसिएशन हम लोगों ने काउंट किया, उसका सेल प्राइस रिकॉर्ड किया, फिर उसका मैंने प्रॉफिट या लॉस निकाला, रादर ये अपना लॉस है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था कि अपना क्लोजिंग फर्नीचर जो 68,000 का है, कंसीडरिंग दिस आई फाउंड दैट कि देयर इज अ बैलेंसिंग फिगर ऑन द डेबिट साइड व्हिच इज अ परचेज ऑफ द न्यू फर्नीचर। 28,000 का नया फर्नीचर आया, मिला के मेरे पास 68,000 का फर्नीचर हो गया। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला था कि नए फर्नीचर के ऊपर भी फुल ईयर का डिप्रिसिएशन होगा बिकॉज इट वाज परचेज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो मेरा 6,800 का डिप्रिसिएशन आ गया और क्लोजिंग फर्नीचर मेरे बैलेंस शीट में गया। तो ये सबका एक इफेक्ट मैंने दे दिया मेरे फाइनल अकाउंट्स में जो आपके सामने है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, देन दे गिव यू मोटर कार जिसका ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग रिकॉर्ड किया। अभी मोटर कार के बारे में आपको क्या दिया है? मोटर कार के बारे में आपको सिर्फ इतना ही दिया है कि वी हैव टू प्रोवाइड अ डिप्रिसिएशन ऑफ 20% पर एनम। और मोटर कार अगर आप चेक करोगे तो 80,000 का 80,000 ही रह गया है। तो देयर इज नो चेंज इन द मोटर कार एक्सेप्ट देयर इज अ डिप्रिसिएशन। On motor car, we have to just provide a depreciation, 20% depreciation to be provided. In outer column, I got 64,000. Depreciation will be debited to profit and loss. So we have completed motor car. Opening stock is a $1 million question mark that we will see. बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया है तो अभी मैं बिल्स पेबल के पीछे जा रहा हूं। तो मुझे बिल्स पेबल अकाउंट बना के चेक करना पड़ेगा उसके बारे में क्या क्या ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। अलॉन्ग विद बिल्स पेबल आई विल सजेस्ट कि आप लोग क्रेडिटर्स का अकाउंट भी साइमल्टेनियसली बना दो ताकि आपको कनेक्टिविटी पता चले उसके बीच का। तो अलॉन्ग विद बिल्स पेबल अकाउंट वी आर आल्सो ड्राइंग क्रेडिटर्स अकाउंट।
क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर इंटरकनेक्टेड, तो इट इज सजेस्टेड टू हैव देयर अकाउंट्स टुगेदर, तो हम लोग बना रहे हैं वो। बिल्स पेबल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 28,000 दिया हुआ है, तो आई एम राइटिंग हियर। और क्रेडिट का बैलेंस आपको 1,20,000 दिया था। अभी हम लोग इसको कनेक्ट करने वाले सभी ट्रांजेक्शन एक साथ उठा रहे हैं, तो विल वेट एंड सी कैसे आ रहेगा वो। रिगार्डिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वी विल सी ऑल इंफॉर्मेशन। दे आर सेइंग दैट there is a transaction here in point number B where they are saying that there is a payment to the creditors, payment to the creditors, so I can say creditors account debit to cash or bank, और कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। $1,84,000। Next transaction they gave you that bills receivable drawn during the year 20,000, bills payable accepted is 16,000, तो आपको bills payable accept भी आपने करके दिया है। bills payable आप किसके फेवर में एक्सपेक्ट करते हो? You accept it in favor of creditors, तो I can say creditors account debit to bills payable account, तो bills payable you have accepted for rupees 16,000, that we have recorded। Then there is, let us see whether there is any other transaction relating to the creditors. They have not given you anything, but here one thing you can notice in 6 point 20% of total sales and total purchase are for cash, so there must be some credit purchases, so for that we will wait and watch। but as far as bills payable is concerned, we will see that आपको देखो यहाँ पे बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 16,000, so I am noting it down। And regarding creditors, there is a big question mark. We don't know what is the amount of creditors. तो closing creditors we need to derive. तो ये यहाँ पे जो आएंगे वो हम लोग को derive करने पड़ेंगे। तो when we close the account, we will be able to find out what is closing creditors amount. Bills payable के लिए इतना ही ट्रांजेक्शन था। I think bills payable का सभी के सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं। ओपनिंग बैलेंस दिया है, बिल्स एक्सेप्टेड दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तो अभी मैं बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज करूंगा तो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल आर ऑनर्ड बाय यू। चेक करो, क्रेडिट साइड में टोटल हो जाता है आपका 44,000 और ये 28,000 का आपको डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पे। तो बिल्स पेबल अकाउंट अगर डेबिट होता है इसका मतलब बिल्स पेबल अकाउंट कम हुआ है, और ये कम हुआ है बिकॉज वी हैव ऑनर्ड द बिल्स पेबल। तो आई कैन से इट इज बिल्स पेबल ऑनर्ड एंड इट इज अ बैलेंसिंग फिगर फॉर यू। 28,000, ठीक है। क्रेडिटर्स के बारे में आई कांट कमेंट राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो द बिग फिगर ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेसेस, ठीक है। तो ये फिगर जब आएगा तो हम लोग देखेंगे। मीनवाइल क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का मीनवाइल तो चैप्टर क्लोज हुआ है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है अपने केस में, आपको दिया है डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो आई वांट के बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स दोनों का अकाउंट आप एक साथ कंसीडर करते हैं। टू अकाउंट्स वी आर प्रिपेयरिंग एज अ वर्किंग नोट्स साइमल्टेनियसली। अपने क्वेश्चन में देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दिया हुआ है 160 एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है 32,000। तो आई एम नोटिंग इट डाउन। इफ यू कैन चेक, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 28,000। Next, I need to see what are the informations relating to the debtors and bills receivable in the given example. You can check it out. आपको उन्होंने बिल्स रिसीवेबल के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। Bills receivable drawn during the year amounts to rupees 20,000. So when bills are drawn, what is your entry? Bills receivable account debit to debtors account. So bills receivable account debit to debtors account.
Next, they have given you this information. This I think we have completely question. Number 2 information is done. Number 1 information here also is done. Of the debtors, a sum of rupees 8,000 should be written off as a bad debts, and a reserve for doubtful debt is to be provided at the rate of 2%. Importantly students, ये जो है वो एडजस्टमेंट है, ये ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है. तो दिस आई विल टेक अप ओनली आफ्टर आई गेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स. शिव कुमार इज मेंटेनिंग स्टडी ग्रॉस प्रॉफिट. यहाँ पे कोई डेटर्स या फिर बिल्स रिसीवेबल का इंफॉर्मेशन नहीं है. इंपॉर्टेंटली आपका ये 6th इंफॉर्मेशन आपके सामने आया है. उन्होंने क्या बोला है कि 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड टोटल परचेसेस आर टू बी ट्रीटेड फॉर कैश. आराम से अभी अपने केस क्वेश्चन में यहाँ पे कैश परचेज भी दिया हुआ है, कैश सेल्स भी दिया हुआ है. आराम से हम लोग इसके बारे में सोचते हैं. पहले मैं यहाँ पे कैश परचेसेस को पिकअप कर रहा हूँ. कैश परचेसेस के लिए आपका एंट्री आता है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. परचेस अकाउंट वी विल डेबिट टू द ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्टली. Cash purchases are given 48,000. It will be also credited to your cash or bank account. Because cash purchases are available, we will be able to find out credit purchases. Question में आपको information दिया है student, 20% of the total sales and purchase are to be treated for cash. तो कांटा से ये मेरे cash purchases जो है वो 20% of the total purchases है. So I will be able to find out what are my remaining 80% credit purchases. So I can say doing the cross multiplication, I will be able to find out my credit purchases. So I am finding it out. So we have got credit purchases that will be credited to creditors account. Students, now I am closing my creditors account, which is sufficient, having sufficient information here. Closing balance of creditors 1,12,000, that will be noted in your closing balance sheet. क्रेडिटर्स कंप्लीट. अभी मैं उसी तरह से कैश सेल्स के भी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ. कैश सेल्स आपको दिया हुआ है 80,000, जिसका एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट. तो कैश और बैंक अकाउंट में पहले मैं डेबिट में लिख रहा हूँ टू सेल्स, दैट इज टू कैश सेल्स. योर कैश सेल्स आर 80,000, so I am recording it. It will have a second effect in our trading account. As question is saying 20% of the total purchase and sales are on cash, तो I can safely presume कि ये जो 80,000 है आपको जो दिया हुआ that is 20. तो what is 80? तो I will be able to find out my credit sales by doing some cross multiplications. So my total sales will be counted 4 lakhs. क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या आएगा स्टूडेंट? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट में मैं लिख देता हूं टू क्रेडिट सेल्स. तो डेटर्स का क्रेडिट सेल्स भी आपको मिल गया. क्वेश्चन में एक और बात दी थी डेटर्स के बारे में, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे पॉइंट नंबर बी में, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2 lakhs. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 2 lakhs. तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख देता हूं बाय कैश और बैंक अकाउंट 2 lakhs. यही अमाउंट आप कैश अकाउंट में भी डेबिट करोगे. We have sufficiently taken information relating to the debtors which is available as of now. तो मैंने डेटर्स का कैश सेल्स लिया है, क्रेडिट डेटर्स के लिए कैश सेल्स को कंसीडर किया है, क्रेडिट सेल को कंसीडर किया है, कलेक्शन को भी कंसीडर किया है. तो आई हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो आई विल फाइंड आउट माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड देन आई विल गो फॉर फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट्स. और अगर आप आपके सामने देखोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी दिया हुआ है, ये भी आप क्लोज करोगे तो क्या मिलेगा हम लोग चेक करते हैं. पहले तो मैं डेटर्स अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ.
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स 2,60,000, ये मेरे बैलेंस शीट में आएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में क्लोज कर रहा हूँ। डेबिट टोटल इज 52,000। फ्रॉम दैट आई एम माइनसिंग 28,000। 24,000 is the remaining figure. It must be bills receivable honored, means we have received money from the honoring of the bills of exchange. तो दो बातें मुझे यहाँ पे नोट डाउन करनी है। पहली बात तो बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड मेरे कैश अकाउंट में आएगा डेबिट में, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स में मेरे बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। वाई 2,60,000 इनर कॉलम? बिकॉज उन्होंने कुछ ईयर एंड में कोई ट्रांजेक्शन या एडजस्टमेंट दिए है आपको। चेक करो, आपको दिया है उन्होंने पॉइंट नंबर 3, जिसके अंदर बोला है कि सम ऑफ 8,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स। तो इसको राइट ऑफ करना एज अ बैड डेट्स, तो मैं यहां से माइनस कर दूंगा बैड डेट्स 8,000। मेरे रिमेनिंग डेटर्स हो जाते हैं 2,52,000, जिसके ऊपर मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? RDD. They have mentioned RDD to be provided 2% on the debtors, तो 2% हम लोग इसके ऊपर रखेंगे। Bad debts and RDD both will be debited to your P&L. Since space is insufficient, I am going on the next page. So it is what I have recorded, RDD. So from the given data, we have completed building, furniture, motor car, stock, ओपनिंग स्टॉक वी हैव जस्ट written क्वेश्चन मार्क। बिल्स पेबल हो गया आपका, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स भी आपका हो गया है। So we have completed almost every information from point number 1, that is point number A. Point number B में क्या दिया है चेक करते हैं। Sale of old papers and miscellaneous income is 20,000। तो ये आपको पैसा मिलेगा, तो हम लोग कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट क्रेडिट। And this miscellaneous income I will credit to P&L account. This we have done. Now miscellaneous trade expenses. Be careful. Miscellaneous trade expenses, they have given you नेट अमाउंट 80,000। तो कितना पे किया वो आपको डिराइव करना है। आराम से हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। ये कैश ट्रांजैक्शन आपको दिया हुआ है, 80,000 का जो आपका एक्सपेंसेस है वो आपने पे किया हुआ है। 80,000 का एक्सपेंस जो है वो आपने क्या किया है, पे किया हुआ है, बराबर है। इसके साथ आपको कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह दिया है, बिकॉज ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो ये आपने पेड किया हुआ एक्सपेंसेस है, इंक्लूडिंग सैलरी एटसेट्रा। तो आराम से हम लोग इसको पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं। In P&L account, I am writing here 2 miscellaneous expenses paid during the period 80,000। सर इनर कॉलम में आपने क्यों लिखा है? बिकॉज आपको आउटस्टैंडिंग का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है एंड में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दे आर मेंशन पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 6 and 7 we have taken care. We have also taken care point number 3, that is also done. Outstanding salary on 31st March 2010, that is the opening outstanding salary is 8,000 and on 31st March 2010 it is 10,000। पहली बात तो मैं क्लोजिंग सैलरी की बात करूंगा, जो आउटस्टैंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग है 10,000। ये हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग वाला अमाउंट ऐड और ओपनिंग वाला अमाउंट हम लोग क्या करेंगे माइनस, बिकॉज ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। तो आराम से हम लोग इसके साथ ऐड करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी और इसमें से माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी इज गिवन 10,000 and opening outstanding salary is provided 8,000. So net amount of expenses comes to 82,000. Closing outstanding salary will appear as your current year's liability. It is of current year और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑलरेडी लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट आपने बनाया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स उसके अंदर नोट डाउन हो चुका है। तो इन दैट वे आई हैव कंप्लीटेड आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस आल्सो।
So we have completed information number B also, C also. C में से एक information अभी भी अपना बाकी है. उन्होंने कहा है कि ये जो मिस्टर शिव कुमार है उनका जीपी रेट जो है वो 30% ऑन सेल है. तो अभी ये इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कर सकते हैं. 30% on sale, that is it is on 4 lakhs at the rate of 30%. It will be 1,20,000, and this same GP I will write down here as a buy balance by GP brought down. Once I note down this, I will be able to close my trading account because बाकी कोई भी information हमारा छोटा नहीं है. We have taken up every single information, सब कुछ cover किया है हम लोगों ने. So I am just closing this. Now before that I need to know what is my closing stock. अभी अगर मैं यहाँ पे मेरा बैलेंसेस देखूंगा तो यहाँ पे मुझे मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. नोट डाउन, यहाँ पे देखो 40,000 दिया हुआ है, तो मैं 40,000 जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पहले क्लोजिंग स्टॉक. ये क्लोजिंग स्टॉक सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड में. लेट्स क्लोज दिस नाउ. टोटल इज 4,40,000. These 4,40,000 minus these two amounts, we'll get 80,000 as a balancing figure here, which is nothing but our opening stock. 80,000. ये opening stock last year के balance sheet में मैं note down कर रहा हूँ. This stock I have taken from trading account. It was derived at 80,000. So in continuity I am closing my PL account now. PL account में और कोई भी information मेरे पास नहीं है जो record करना रह गया है, सब information हो चुका है. PL account we have prepared on a combined sheet. So for that purpose these two sheets you can see in front of you. One by one आपको ये दिखेगा. Total of credit side I am taking now. Rather let me check first. Debit side is heavier or credit side is heavier? I think debit side is heavier. This is 2 lakhs, 1,40,000, and here it is on debit side. Let me check. Our total of debit side is 165,840. On credit side of PL account, you get the balancing figure. By net loss, from debit side I am minusing credit side. You get 25,840 as a net loss. ठीक है, तो ये नेट लॉस हम लोग कैपिटल में से माइनस करेंगे करंट ईयर के. तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में कैपिटल अभी भी अपना लिखना बाकी है, दैट वी विल नोट डाउन, एंड फ्रॉम दैट यू विल माइनस नेट लॉस फॉर द करंट ईयर. अभी एक ही बात क्लोज करना बाकी है, वो है लास्ट ईयर का बैलेंस शीट. तो हम लोग क्लोज कर देते हैं, और इवन अपना कैश अकाउंट. पहले मैं कैश अकाउंट क्लोज करना चाहूंगा आपका. आपके कैश और बैंक अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस इन्होंने दिया हुआ है 1,04,000 रुपया, 1,04,000. दैट आई विल नोट डाउन. होपफुली इट शुड टैली. अगर टैली नहीं हुआ तो वी हैव टू एडजस्ट इट एज अ इनकम और एक्सपेंस समवेयर. It is tallying at 5,12,000. And closing cash balance I need to write in my balance sheet. ठीक है, अभी मैं लास्ट ईयर का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोज करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ. एक ही ऑब्जर्वेशन रहेगा, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. दैट वी विल डू दैट नाउ. बैलेंसिंग फिगर इज 756,000, जिसमें से उन्होंने बोला कि पीएल अकाउंट का बैलेंस आपका था 40,000. तो प्योर कैपिटल आपका लास्ट ईयर के बिगिनिंग में था 7,16,000, and because of last year's profit it has become 756,000. So this I will write as the opening balance here, and that from 756,000 I will minus current year's loss.
So this is what your closing capital we have got. I believe आपको ये समझ में आया होगा. फिर भी कोई डिफिकल्टी होगा तो प्लीज लेट मी नो. This is what your closing capital which we have calculated. Let me see first. I think कुछ calculation. Repeating from this point, capital में से loss minus हो रहा है. So students, from this capital we have subtracted net loss of 25,840. We have got 7,30,160 in outer column. Now I need to close my balance sheet. Before that I am just verifying whether any amount is left from the given data. We have taken building, we have taken motor car, we have taken everything. सब कुछ ले लिया है. बिल्स पेबल भी ले लिया है. 16,000 का नो बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया है, तो लेट मी राइट बिल्स पेबल ऑल्सो 16,000. ये आपका बिल्स पेबल था 16,000. आई नीड टू राइट so I have taken bills payable also, I have taken closing cash balance also, bills receivable closing 28,000. I need to write. Let me check. तो ये भी लिखना रहेगा. तो हम लोग रिकॉर्ड कर दिया. नाउ आई होप मेरा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा. बैलेंस शीट टैली एट 868,160. In this way, this single question of single entry is done. क्वेश्चन का लेंथ काफी बड़ा है बिकॉज रिक्वायरमेंट ही वैसा है. सीए कोर्स है, कोई हलवा तो है नहीं. तो वी हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू कंप्लीट द क्वेश्चन इन टाइम. थोड़ा सा प्रैक्टिस करो. पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा, आई वांट कि आप एक बार वीडियो वापस देखो तो आपका डाउट क्लैरिफाई हो जाएगा. देन टू इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स. विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एट अर्लिएस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो with lot of patience. See you. God bless you.